चलिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के सीरीज में आगे बढ़ते हुए पहले कल का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव द मैन एंड हिज एक्शन एज हिज लेगेसी। रॉबर्ट क्लाइव की हो तो हमने देखा ही था कैसे क्लाइव की होशियारी की वजह से हारती ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल में और साथ ही साथ कर्नाटक में अपनी जीत हासिल करती है। कर्नाटक की स्ट्रेटजीज की वजह से वो एक story British make him interesting. Early life of Robert Clive. Robert Clive was not born into rich education family. He was a kid of student who was to top university and joined big company in high position. वो पहले से ही अमीर फैमिली में तो नहीं था। वो एक ऐसा बच्चा था जिसने अपनी एजुकेशन के बलबूते पे एक बड़ी कंपनी में एक हाई पोजीशन हासिल की थी। यूज्ड टू थिंक हिम एज अ यूजलेस। उसके फादर हमेशा सोचते थे कि वो यूजलेस है। स्कूल बुली उसने बहुत और लोकल ट्रबल मेकर। हिज फादर पर्सनली नोन ऑफ द डायरेक्टर board number of his system. He asked to director, please give my son job in the company. He is not doing well here. Maybe something good will happen him. So Clive gave him very low level job in the company as a writer at a very bottom of the ladder. वो नीचे से उसने सिलाई की। Clive did not enter the company because of talent and education. He entered through a personal connection. He started a simple clerk and the lowest position. But Clive had something most people don't, courage and natural ability. He quickly rose through the rank and he come up to Madras and he was officially Clive officer, but he also started volunteering in military activity. He picked up a military training on his own and began contributing on military side as well. As lifetime of Robert Clive. Early life. Born in Shropshire, England, troublemaker in school. Father considered him useless. Got a job as a clerk in East India Company through the father connection. Arrived in Madras. Started as a Clive clerk voluntarily of military duty. Show extraordinary courage. Second Carnatic War led the daring siege of Arcot and held Fort Arcot against very odd. This sign event changed the direction of Second Carnatic War in favor of British. First returned to England, went back to England with lot of money, tried to back seat in Parliament. और फिर कार्नेटिक वॉर के बाद वो वापस इंग्लैंड चला गया था बहुत सारा पैसा लेके। ट्राई टू बाय सीट इन पार्लियामेंट में वो सीट चाहिए था उसे सक्सीड, बट हिज रोल वैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉज नॉट वेरी गुड. ही वॉज एक्सप्लॉयड फ्रॉम पार्लियामेंट. फिर 1756 से 56 रिटर्न टू इंडिया विद ड्यूल रैंक बोथ मिलिट्री एंड क्लाइव रैंक. पार्टिसिपेट इन द कैप्चर ऑफ Fort Vijayadurg on the west coast Maharashtra from Maratha Navy, then come to Madras. Okay. Battle of Plassey तो हमने देख ही लिया है. Civil personality lead the fort without waiting for order for anyone. Respect Calcutta, then fought on Battle of Plassey. Met Nawab of Bengal and company. ये सब आप देख लीजिएगा. सेकेंड रिटर्न टू इंग्लैंड. फिर से वो रिटर्न गया एंड कम टू एक्सट्रीमली रिच. फिर बहुत अमीर बन के आया. बिग मैंशन इन लंदन. बिकम फेमस एंड वेरी वेल्थी मेंबर पार्लियामेंट इन दिस टाइम. मैरिड बाय नाउ इन हिज अर्ली 14. आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर company needs someone who understands Indian politics well. Called Clive back and he returned as a governor of Bengal for second time. Signed the two treaty of Allahabad, designed a dual government system and then left. Final jail. Back in England, his image had changed. Now see as a corrupt and villain. Parliament started tired against him. Found not guilty, but he was disturbed. He committed suicide at age. Company role in Carnatic War. अब देखते हैं. The siege of Arcot
During the Second Carnatic War, French were already very powerful. They had upper hand in Hyderabad. They also gained the upper hand in Carnatic. The Clive did something very bold and risky. He captured Fort Arcot against very Viod. This was daring action. Nobody expected him to succeed, but he did. Impact. Because of Clive's action at Arcot, British again power hand in the Carnatic. Without him, French might have been dominant all over Carnatic. The entire game changed because of his one of the act of courage. Important note: the siege of Arcot was gamble. If Clive had failed, the company itself might have been thrown out, not the French, but the English. It could have gone either way. The Battle of Plassey, a personal adventure. The Battle of Plassey was very different from normal war. It was Clive's personal initiative. He didn't wait for order from anyone in company from London. He simply went and did it. When the company lost Kolkata to Nawab Sirajuddaulah, Clive was it not as a defeated but as an opportunity. He was chance to take back Kolkata, expand company power in Bengal much more than before. He managed whole affairs through mixed military action and conspiracy. यहाँ पे देखें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ प्लासी एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑफ प्लासी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस हम ऐसे ही रिवीजन कर रहे हैं। कंपनी सपोर्टेड बीइंग जस्ट ट्रेडिंग कंपनी इज स्टार्टेड बिकमिंग स्टेट एंड गवर्नमेंट। जैसा कि हम देख रहे हैं, बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी को बंगाल की दीवानी राइट मिल चुकी थी। एट द टाइम ऑफ प्लासी द कंपनीज पॉलिटिकल पोजीशन वाज स्टिल वेरी shaky. द फ्रेंच and Dutch were completely beaten in Bengal. Company got monopoly over Bengal Tower. After winning Plassey, company could lose everything in the next battle, Buxar-Mysore War. The flow of wealth from India to Britain started. Plassey winning was not sure shot. It was global, just like Arcot. Clive's role after the Battle of Buxar. After the Battle of Buxar, the company needed someone who understands Indian politics deeply. They called Clive back to India as a governor of Bengal for the second time. This time, Clive signed two important treaties of Allahabad. फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आलम शाह के साथ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर में बंगाल के नवाब एंड मुगल बादशाह शाह आलम टू एंड अवध के नवाब, ये तीन एक साइड और एक साइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, तो जिसके वजह से वो एक साथ इन तीनों पावरों को हराने के साथ साथ उसे बड़ी जीत मिली थी और उसने हर किसी से एक ट्रीटी की थी। तो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में देखते हैं शाह आलम टू मुगल एम्परर उससे क्या ट्रीटी की। कंपनी को दीवानी राइट मिली ओवर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मुगल बादशाह से। दिस चेंज कंपनी स्टेटस फ्रॉम डी फैक्टो टू डी जूरी। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में नवाब अवध से किया, अवध को बफर सिस्टम की तरह यूज किया, बफर स्टेट बनाया, कन्वर्ट इनटू बफर। दिस बिगेन टू क्लाइव रिंग फेंस पॉलिसी की प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ फ्रेंडली स्टेट अराउंड ब्रिटिश टेरिटरीज। Clive also designed the dual government system in Bengal. Let's understand. After Buxar, Clive created system in Bengal called dual government. Here is how it is. First, company rule. Held Diwani right to collect revenue system. Nawab rule responsible for administrative and law. अब यहाँ पे क्लाइव ने बहुत होशियारी से उसने पूरी इलाके की भाग दौड़ अपने हाथ में एक साथ नहीं लिया। ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, इसका जवाब आप जरूर कमेंट में बताइए। तो कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू यानी दिवेनी राइट को अपने हाथ में लिया और एडमिनिस्ट्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी थी वो नवाबों के हाथ में ही थी। ऑल द पावर एंड मनी
किसके हाथ में? कंपनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में दे दी? नवाबों के हाथ में, विथ नो मनी एंड नो रियल अथॉरिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर ऑफ पीपल, नो रिसोर्स ऑफ एक्चुअली यहाँ पे मिला इसको। इसका रिजल्ट हुआ टोटली डिजास्टर। गवर्न बट नॉट मनी, द कंपनी हैड ऑल द मनी बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस क्रिएट anarchy and directly to Great Bengal famine. One of third of Bengal population died. This famine of 1770 called Cheta Manavantar in Bengal. It was one of the biggest disasters in India history under British rule. One reason give of Clive trial in Parliament was his dual government system. Clive corruption and personal greed. Clive became extremely rich by looting, accepting bribes, and doing private trade, which was officially not allowed. He accepted huge bribes from Nawab of Bengal. Both his term as a governor, he became zamindar and extract lakh of rupees. He engaged in private trade on large scale. Eventually, he let ban the private trade for other companies' officers. Once he became governor, he paid money to people in London also to buy political support, which was corrupting London political culture. Famous quote to Clive when Parliament asked him, "How did you dare to take so much money? Did you not feeling anything?" Clive replied, "I stand astonished at my own moderation." He meant I could have to take much more. Murshidabad at the time was as rich as London, may be richer. Everything was open to me, and you think I took too much? Parliament trial and death. When Clive returned to English after his second term governor of Bengal, public opinion had turned against him. He was now seen as corrupt, violent company official, not a hero. अब देखिए लास्ट के टाइम में क्या हुआ। व्हेन क्लाइव रिटर्न टू इंग्लैंड ही सेकेंड टर्म एज अ गवर्नर बंगाल, पब्लिक ओपिनियन हैड टर्न अगेंस्ट ही वॉज corrupt and violation of complete not hero. Parliament started trial against him, corruption and looting Indians, setting up dual government which caused to Bengal famine, corrupting London political circle by paying bribes. He was found not guilty in the trial, but he was disturbed by public humiliation and his own guilty conscience. Then he committed suicide. How history has judged Robert Clive, changing view over time. This is very important area because people judge Clive as completely changed depending on the time period. Called historiography, history of how history is written of Robert Clive. Time period during Clive's own lifetime. Analyst people saw Clive useful tool for company, but personally seen as upstart, social climber and corrupt person and daredevil. When he died, he was not hero. He was a controversial figure at the best. Victorian England, 1830s. Glorified as Clive of India, a founding father of British India Empire, and Lord Macaulay wrote a long essay praising him as a great man who built the empire. Why? Because by 1830 British had conquered most of India. The aristocrat and bureaucrat now ruling India were elite people who want to show that India was conquered for noble civilizing mission. So they glorified the early founder, including Clive. Late 20th century, seen as a villain, a looter, a heretic and sociopath and symbol of the worst of British imperialism. Like William Dalrymple called him unstable sociopath and the least principal leader of unregulated corruption that looted India during Black Lives Matter movement. There were debates about removing his status.
Lord Macaulay essay on Clive become required regarding a British school children for Nelly Sanders. ये रहने दीजिए, आप खुद देख लें. Achievement and failures of Robert Clive. Achievement क्या था? Sieging of Arcot. फेलियर क्या था उसका? डुअल गवर्नमेंट फेल हो गया था क्योंकि बंगाल में फहमान आ गई थी. बैटल ऑफ प्लासी, उसमें मेड नाउ बंगाल कंपनी started transfer from trading body to governing. Extreme corruption. Treaties of Allahabad destroy the enemy of Bengal. Power without responsibility to complete anarchy. Remove from Dutch companies from Bengal. Reverse the flow of precious metal. Bengal wealth start flowing to British instead of another way. Was first person give company political identity, not just commercial, destroying moral fabric of company administration. Historian wedding. The teacher's conclusion. Clive was neither a statesman or nor a great person. He destroyed the work of glory through his own action. His personal greed. ये रहने देते. Binary view in history. A problem in history. People even get painted in black and white. This thing was happened. Key figure of the Battle of Plassey area. Person. Robert Clive Sirajuddaulah. Extreme view. 1. Founder of British India Empire. A hero who built something great. View. Lord Macaulay essay. An unstable psychopath and symbol of empirical corruption and thief and exploiter. A martyr who gave his life to the freedom of India and the first freedom fighter against British colonialism. Violent and cruel who put British soldiers in the black hole of Calcutta. सिराजुद्दौला. ये तो होगा. UPSC क्वेश्चन अबाउट क्लाइव वेरी फ्रीक्वेंटली आज देखते हैं. चलो क्या है. वॉज क्लाइव द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर. की पॉइंट इसमें क्या क्या हमें कवर करना चाहिए. तो सीजिंग ऑफ आर्कोट, कार्नेटिक वॉर विन, बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल अगेन, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दीवानी, बफर स्टेट, but also mention these were glumber, not certain. British Empire was still very fragile after Plassey. Initial, eventually achievement and limitation of Robert Clive. ये सब हमें मेंशन करना है. And achievement and was यहाँ चल रहा था. Evaluate the achievement and limitation of Robert Clive and who Clive called Clive of India and why. इसमें हम देखेंगे विक्टोरियन इंग्लैंड गिव हिम his title. Macaulay essay. British wanted to glorify empire founder context of 1830 and British now rule most of India want to justify as more noble mission. अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर चालू होता है जिसमें हम हैदर अली, टीपू सुल्तान एंड फोर एंग्लो मैसूर वॉर को देखेंगे. अब देखते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर. पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते. ये आफ्टर बंगाल प्लासी एंड बक्सर. Process of British acquiring the entire Indian subcontinent over the next 30 to 35 years. After Buxar, the British had conquered Delhi and process of conquest continued until around 1880 with the Burma War and Afghan War.
बीच में इनके एक दूसरे से भी वॉर हो रहे थे, बर्मा, अफगान. बट हियर important thing to understand, after winning Bengal, British company made focus not Punjab, not Carnatic, not Himalaya. The main focus South India, especially Carnatic and Malabar coast. These were major trade, both textile and spice was happening. This where real competition was with the French, Dutch and local power wanted to pacify, control and claim down the entire South India, and biggest obstacle in their way Kingdom of Mysore was under Hyder Ali and under Tipu Sultan. The Fourth Anglo-Mysore Wars. Quick word. The company fought wars against Mysore over approximately 14 years. 1760 से लेकर 1799 तक 4 बार मैसूर वॉर लड़ी 40 साल के इस पीरियड में. दिस वॉज मल्टी जनरल कॉन्फ्लिक्ट, मल्टी जनरेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर फॉर दिस वॉर. फर्स्ट वॉर पीरियड क्या था? 1767 से 69, मतलब 67, 68, 69 3 साल तक चली. लीडर कौन थे यहाँ पे? हैदर अली. और किससे हुआ था? ब्रिटिशर से. ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ पे हुई थी और एंड इन ब्रिटिश यहाँ पे डिफेट हो गए थे, यहाँ पे ब्रिटिश हार गए थे. सेकेंड वॉर 1780 से लेके 84, हैदर अली इस वॉर में जीत गए थे. देन टीपू सुल्तान आए थे जो हैदर अली के बेटे हैं. ट्रीटी ऑफ मैंगलोरो यहाँ पे हुई थी. नॉट अ क्लियर ब्रिटिश विक्ट्री, टीपू होल्ड अ स्ट्रॉन्ग. क्लियर विक्ट्री तो हुई नहीं थी बट टीपू भी अभी पावर में थे. थर्ड में 1790 to 90 टीपू सुल्तान से हुआ था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम. टीपू ने अपनी हाफ हिज टेरिटरी एंड हैड टू गिव हिज सन एज अ हॉस्टेज. टीपू यहाँ पे अपनी हाफ टेरिटरी लूज कर दिए थे ब्रिटिशर्स को और उन्हें अपने सन को भी हॉस्टेज करके रखना पड़ा था. फोर्थ वॉर 1799 में टीपू सुल्तान से ही हुआ था. टीपू डाई फाइटिंग एट श्रीरंगपट्टनम. किंगडम ऑफ कम्प्लीटली डिफेट. अब टीपू के मरने के साथ किंगडम ऑफ मैसूर भी खत्म हो गया. फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. देयर वाज 3 मेन रीजन फ्रॉम विच क्वेश्चन कैन कम. तो अब वो देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन एरिया. कॉजेस ऑफ वॉर. व्हाट टू कवर, क्या करना पड़ेगा हमें. 2 टाइप ऑफ कॉजेस. इमीडिएट कॉजेस. दिस can change from war to war. Fundamental long-term causes. Through the 4 all war you need to understand both. और फिर why did Mysore fail? Reason for downfall. This cover all result of 4 wars together. Why did British win deposit? Hyder Ali and Tipu being very capable ruler. Tipu limitation compared to Hyder. British analyzed system. मराठा निज़ाम ब्रिटिश. सब देखना पड़ेगा हमें. मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म ऑफ हैदर अली एंड टीपू. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी अबाउट मैसूर. स्पेशल इकोनॉमिक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. स्टैंडर्ड ऑथर 18th century Indian kingdom. What Tipu Sultan religious fantasies. This is controversial question. He religiously motivated or he nationalist king defending his kingdom. This topic involves completing historical interpretation and must be handled carefully. Understanding case 2 type. This is very important. It's not just Mysore. Every has 2 kind of causes. अब हम लोग पहला देखते हैं इम्पोर्टेंट कॉजेस. इमीडिएट कॉजेस क्या था इन वॉर का. These are specific event to trigger that start a particular war. These are the deep underlying reason that exist through all 4 wars. These changes of war to war. The immediate cause of the first Mysore was different from the second, third and fourth. This does not change. They remain the same across all 4 wars regardless of which generation of ruler is involved. Example: a specific treaty violence, an attack an ally,
are succession disputes and British desire to control South Indian trade. Mysore was the only one power blocking complete British dominance of South India. अब देखते हैं why Mysore is a special case of Indian kingdom fought against British 18th century. Mysore is unique. अब ये यूनिक क्यों था देखते हैं. हैदर अली and Tipu Sultan not just fighter the British, they also actively modernized their kingdom. मतलब वो सिर्फ लड़ ही नहीं रहे थे, वो अपने किंगडम को भी बढ़ा रहे थे. मॉडर्न इकोनॉमिक, मॉडर्न मिलिट्री, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो फ्रेंच के साथ मिलके बहुत सारा रिफॉर्म किए थे. मेड मैसूर अ रियल चैलेंज फॉर ब्रिटिश. दिस इज व्हाई मोस्ट in this aspect. Out of UPSC questions about Mysore were more star about the modernization step taken by Hyder Ali and Tipu Sultan. अब हैदर अली एंड टीपू सुल्तान की कंपैरिजन में देखते हैं हम लोग. बैकग्राउंड क्या है. हैदर अली सेल्फ मेड मैन रोज फ्रॉम बीइंग अ सोल्जर टू बिकम द रूरल ऑफ मैसूर. मतलब हैदर अली शुरू से ही किंग या राजा नहीं थे, वो एक नॉर्मल इंसान थे. हॉर्समैन की तरह काम करते थे. विजयनगर से ही एक डायनेस्टी जो अलग हुई थी मैसूर में राज कर रही थी, उसी में की आर्मी में हॉर्समैन की तरह काम करते करते धीरे धीरे उनकी पोजीशन बढ़ती गई और वो रूरल बने. और टीपू सुल्तान तो रूरल थे. हैदर अली के बेटे थे, तो उनके पास इनहेरिटेंट पावर थी. एबिलिटी टू बिल्ड अलायंस, वेरी स्किल थे बिल्डिंग अलायंस एंड मैनेजिंग रिवाइवल. मतलब मैसूर में पहले ही मराठा निज़ाम और अगर अलग यूरोपियंस का हमेशा खतरा रहता था, तो उन सबको वो पहले से ही मैनेज करते थे. तो उनके पास अच्छी खासी एबिलिटी थी कैसे अलाइज करके रखना है. लेस स्किल एंड डिप्लोमेसी, इसके मुकाबले टीपू सुल्तान के पास इतनी स्किल नहीं थी. फेल टू मेंटेन अलाइज, वो अपने अलाइज को मेंटेन नहीं कर पाए थे और लास्ट में वो आइसोलेटेड की तरह लड़े. फेमस कोट क्या है. बेटर टू लिव वन डे एज अ टाइगर देन 100 ईयर एज अ शीप. मतलब ये इनके लिए कहा जाता है कि एक दिन का शेर बन के रहने से तो बेटर टू लिव वन डे एज अ टाइगर देन 100 ईयर एज अ शीप. 1000 साल भेड़ बन के जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर बन के जी. दिस शोज हिज एग्रेसिव पर्सनैलिटी बट ऑल्सो हिज विलिंग टू टेक on too many enemies at once. Overall achievement born to create empire, a rural expand Mysore into major power. Born to lose the empire, brave and reformist, but ultimately could not survive against British consolidation. Lord Wellesley, another Wellesley, who later became the famous Duke of Wellington and defeated Napoleon, made a very typical comment about Tipu Sultan when he defeated him. This quote is important. It will be covered in the next lecture. What will be covered in the next lecture? The current lecture has introduced topic Mysore. What next lecture will cover in detail the specific reform of Hyder Ali and Tipu Sultan. Mysore was able to fight for 14 years against British. क्विक रिवीजन करते हैं. रॉबर्ट क्लाइव को देखा, क्लर्क की तरह स्टार्ट किया, गवर्नर ऑफ बंगाल 2 बार बने, करेज एंड अपोटिज्म, सीज ऑफ आर्कोट किया, सेकंड कर्नाटिक वॉर का पूरा रुख ही चेंज किया, बैटल ऑफ प्लासी और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दीवानी राइट, बफर स्टेट, डुअल गवर्नमेंट, बंगाल फेमाइन, बंगाल डाई, ही वॉज पर्सनली very corrupt. Victorian England called him Clive of India and glorified him. Modern historians call him a Sophite and exploit. Commit suicide against. मैसूर में भी हम लोग ने देख चुका था. क्या क्या देखे हैं. मेन ब्रिटिश गोल, कंट्रोल साउथ इंडिया, ट्रेड,
Hyder Ali created empire, Tipu Sultan lost empire, but he also great modern focused modernization reform of Hyder and Tipu Sultan, consequence of individual war, ये सब देख चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।